I'm back with a new lesson. Well, in today's lesson, we are going to take up 4 words. They are IDYLL, IDYLL, IDYLL and IDYLL. They seem so similar, are they? Well, I'm sure you heard these words. You read them somewhere, or you probably use them, but sometimes they are a little confusing because their sounds are similar, but they have totally different meanings. So let us start, and I would like to tell you what is the difference between IDYLL, IDYLL, IDYLL and IDYLL. The first word is IDYLL. It means a very happy, peaceful and simple period of time. मतलब सुखी जीवन. Her tenure as a doctor was not the IDYLL that she had expected. The next is IDYLL. A person who is loved, admired or respected a lot. Sometimes it's also an object which represents a deity. Deity भगवान की मूर्ति को कहा जाता है. An idol is a noun also. And the example is, my father has been my idol since childhood. And another example is also there. Atheists do not believe in idol worship. Atheist का meaning यहाँ पे ये है जो बंदा भगवान में विश्वास नहीं करता. And the third is ideal. That is perfect, जिसको हम बोलते हैं आदर्श, most suitable. An ideal world, there would be no need for a police force. And the last is idle. Not working or being used. जो काफ़ी समय से बेकार पड़ी हुई है चीज़ जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. For example, amidst this lockdown, majority of the factories now stand idle. Amidst का मतलब है यहाँ पर बीच में, कि इस लॉकडाउन के समय, इस लॉकडाउन के दौरान काफ़ी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जिनमें काम नहीं हो रहा है, वो काफ़ी टाइम से बेकार पड़ी हुई हैं. So I hope and I'm sure your confusion is all clear now. So guys, go ahead and use these words in your own sentences. But the video is not completed yet. I will cover one more topic today, that is about the time sequences. Time sequences होता क्या है? Time sequences वो होते हैं, sequences are the words जो ये है first, next, then, after that and finally. If you notice guys, मैंने यहाँ पे arrows लगाई हुई हैं हर एक वर्ड के नीचे. तो दैट मीन्स ये एरोज इसके लिए सबसे पहले ये वर्ड यूज होगा, देन ये, देन ये, देन ये, देन ये ऊपर नीचे कभी यूज नहीं होता है, ये हमेशा सीक्वेंस में ही यूज होता है, इसीलिए हम इनको टाइम सीक्वेंसेस कहते हैं. वी ऑफन यूज दीज टाइम सीक्वेंसेस व्हेन वी गिव इंस्ट्रक्शंस, डिस्क्राइब अ प्रोसेस और समटाइम्स टू टेल स्टोरीज. क्योंकि जब भी हम कभी कोई प्रोसेस या कोई स्टोरीज या कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, हमेशा कहते हैं पहले ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, तो इसलिए ये टाइम सीक्वेंसेस हम वहां पे यूज करते हैं. तो सीक्वेंसेस हमें हेल्प करता है टू ऑर्गेनाइज द स्टेप्स इन अ प्रॉपर वे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जाम्पल. मेकिंग एन ऑमलेट. फर्स्ट आई ब्रेक द एग्स. नेक्स्ट आई हीट द बटर इन अ पैन. देन आई एड द एग्स. आफ्टर दैट I sprinkle some salt on the eggs. Finally, I eat the omelette with toast. तो आपने देखा होगा जो ये मैंने एक प्रोसेस को पूरा डिस्क्राइब किया है उसमें मैंने ये टाइम सीक्वेंसेस को यूज किया एंड प्रॉपरली यूज किया है. तो विद द हेल्प ऑफ दीज टाइम सीक्वेंसेस हम कभी स्पीकिंग में जैसे हमें कभी स्टोरीज बतानी होती हैं, कभी भी कुछ भी यहाँ पे भी यूज हो सकता है एंड इन योर राइटिंग ऑल्सो. So I want you to use these in your own ways or think about ways you can use these time sequences in your own life. And I hope you guys enjoyed watching it. I will be back with a new lesson. Till then, goodbye, and please guys, if you like this video, please like and subscribe my channel. Thank you so much.